Anand, you want to go before I start my? Come on, yaar. आओ ना आनंद साहब। हाँ नवराज बोलिए। नवराज, हाँ बोल। हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को आपसे ये डिस्कस करना था, अभी अभी जो अपने मार्केट का कंडीशन है, क्या अभी 2024 के इलेक्शन को मतलब फैक्टर इन कुछ उसमें हो रहा है जिस हिसाब से जो कंडीशन बन रही है, इक्वेशन बन रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता 2024 से पहले कोई मार्केट कोई बड़ा अपमूव देगा, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है 2024 का इलेक्शन, और उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 साल रहा है। Yes, you are right, absolutely right. अभी कुछ जो टारगेट दे रहे हैं अभी 24,000 22,000 निफ्टी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी के पीछे कोई बड़ा ब्रेकआउट जो अभी मुझे जैसे लग रहा है, अभी जो ब्लू चिप स्टॉक्स जो सो कार्ड है वो नहीं चलेंगे 2024 से पहले। बाकी जो मिड कैप में कुछ क्वालिटी स्टॉक कोई चले तो चले, पर ब्लू चिप स्टॉक नहीं चलेंगे। एचडीएफसी ट्विंस हो गया, रिलायंस हो गया, और ये लग भी रहा है क्योंकि जो 4-5 दिन का मूव था वो एक तरीके का फॉल्स मूव लग रहा था, और वही हुआ। नहीं, I agree with you. Fully agree with you. क्योंकि सर 2024 से पहले कोई बड़ा स्टॉक मार्केट में रैली, और अभी जो आज के रूमर आ रहे हैं, अभी जो कैपिटल गेन टैक्स को गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज करने की सोच रही है, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। नहीं वो डिनाइल आ गया, ऐसा कुछ है नहीं सर। डिनाइल तो इनका एलटीसीजी के लिए भी आया था, फिर ये इस गवर्नमेंट का ये सर है फंडा, ये डिनाइल में ही रहते हैं, एकदम से लाते हैं सर बाद में। आपको बीजेपी पसंद नहीं है? सर ये तो मैं नहीं कह सकता। मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए, एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। ओके या सचिन? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है बेटा, बोल। बस सर व्यू तो अभी बेयरिश ही है, बिकॉज ये जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी स्टॉक्स ने अपना कल के लो के आसपास ही क्लोजिंग दी है, और जब तक 17,800 के नीचे है तो व्यू तो बेयरिश ही है जी। और कोई आइडिया, शॉर्टिंग आइडिया कि तू तो मतलब आप तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही खेलते हो ना? जी सर। साला मेरे को पता ही नहीं चलता है। एक बार बोला बेच दे, सीधा 18,150 में बेचा, अभी तक है खड़ा, क्या करे, लग गया पैसा। एनीथिंग एल्स सचिन you'd like to add? नो सर, बस बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेजिलिएंट, मतलब मैंने पहले भी देखा है ऐसे 3-3,500 पॉइंट का जब ऐसे आता है अप मूव, तो वो थोड़ा रेजिलिएंट, इनिशियली थोड़ा रेजिलिएंट होता है गिरने में, और जब गिरेगा तो 2-3 दिन में ही 1,000-1,500 पॉइंट ऐसे ही 2 दिन में ही निपटा देगा। सो निफ्टी का? बैंक निफ्टी सर, बैंक निफ्टी। अच्छा, नहीं निफ्टी सुना मैंने, बैंक निफ्टी। Anyway, thank you so much. Now, in 2007-8, before the crash, our market cap was 75 trillion rupees. 75 trillion rupees. And we were not able to hold it. It went down to 30 trillion in a very short span of time. Thereafter, Nifty started moving up only in 2013-14. Again in Feb 16, it came down. Then again up, again down, again up in 2000. What the? In 2020, Jan Feb 12,000, 13,000.
फिर आया कोरोना 7,500, फिर हो गया 18,800. The point I want to make you all understand, and also the market cap now is 260 trillion. 260 trillion. A lot of things have changed circa 2007-8 and now. Also, rupee has appreciated, debasement of currencies and all not. Now this run of 2020 and 2023, kindly forget. Don't think this is real. This is abnormal, unsustainable. Under no circumstances uh, this will be maintained. Now, people say you are bearish. I am not bearish. I have a portfolio, but I am a realist. I know how to calculate the value of a stock. It's very simple, very easy. So this frothiness brought in by retailers that they would buy at any flash on a TV, whether it's positive or negative, they will buy a stock. So this kind of market will definitely end in a big correction. I'm not saying fall or all that. Correction. अच्छा लगता है सब लोग को. नहीं तो असली वर्ड है धजिया उड़ जाएगी. इतना गिरेगा सोचा नहीं होगा आप लोग ने. ये अभी बहुत लोग ने बोला, तुम बोलता था 12,000 होएगा 12,000. Yes, I'm wrong. Wrong in the sense the time period I had estimated went haywire. Because at first I did not realize that the mob is so mad that they would buy any Tom, Dick and Harry shares at any price. They are still buying Jet Airways now. ऐसा मॉब के सामने तो मेरा जो भी एस्टिमेट है वो गलत हो ही जाएगा. But again, one thing, mean reversion. कुछ भी कर लो, मीन रिवर्जन होगा. ये दिवीज लैब 1200 होगा. ये क्या तरीका है कि 1.5-2 लाख का डिलीवरी में 1-1.5 लाख का फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट और भाव 100 रुपया बढ़ा देते हैं. ये रैंपिंग अप हो रहा है. मेहरबानी करके इसमें फंसना मत. फंस गए, काम से गए. इन्फोसिस जो है 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है. मार्क माय वर्ड्स, ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, वो लोग को एक बात समझ में नहीं आती है, ये भाव है लिक्विडिटी का. अगर सिस्टम में लिक्विडिटी नहीं रहेगा, दे विल करेक्ट अ लॉट एंड देन a base will be formed. Another thing I wanted to say is, what is the rush? What is the need to buy every dip? Why? Are you a scavenger? Oh, if somebody is distributing, why do you have to buy? Why do you have to catch it? ठंडा लेके. Sorry. So, where is the need to buy the dip? Oh,
एक दो स्पेस पे वो कोई वो पूछा था, आई थिंक करण भाई को कि कुछ कि इन्फोसिस इतना नीचे आया है, अभी ये गैप फिल करने के लिए ऊपर नहीं जाएगा। क्या पागलों जैसी बात करते हो यार, गैप नहीं ये ना वो। एक तो ये पूरा ट्विटर चार्ट स्टॉक से भरा है, किसी को पता नहीं है निफ्टी का वेटेज क्या है, निफ्टी में कितना स्टॉक है, क्या कुछ नहीं मालूम। ओके, इंटरेस्टिंग थिंग्स, और प्रैक्टिकल थिंग्स on the screen. You look how many buyers are there, sellers are there. 4 लाख बायर है और 5 लाख सेलर है. Don't ever look at it. Don't ever look at it. It is padded up. मतलब ऊपर 20 कोट रीजनेबल होगा और बाकी का 3,80,000 कोट एकदम नीचे होगा. तो डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन कि ये 4 लाख बायर है. नो, वो बायर बायर कुछ नहीं है. सिमिलरली सेलर He's going alpha. हाँ तुम्हारा कोई जोतो? हाँ He's going alpha. हाँ, let him go. Sorry. So don't look at the depth and it's nonsense. Another thing is, don't put false orders. Don't put false orders. चलना यार, 310 का भाव है लॉरस, मैं 200 अरे 300 में डालता हूँ, वो थोड़ी आने वाला है. मत डालो ऐसा ऑर्डर. You can see 5 orders, zero, then all can see 20 orders. If you go higher, you can see 50 orders, and if you pay extra, you can see all the orders. अगर गलती से डाला, वो कोई देख लिया और दे दिया, तो तुम किधर भागेगा. तो मेहरबानी करके खोटा खोटा ऑर्डर मत डालो. और क्या बोलना था, I don't know. This whole market is made up, manipulated bullshit. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. वो अभी HDFC बैंक has become another Bandhan bank. Sorry to say, but only in terms of open interest and all that. Quality of bank is first class. Goldman Sachs is also first class, but the stock is down. So HDFC बैंक उसको बोलते हैं ये दुग्गड़ बन गया. Duggad was a big time cotton speculator in older times, very old times. तो उसने पूरा कॉटन ले लिया. ऐसा ही ये HDFC बैंक है, सब लोग ने मिलके ले लिया. मेरा व्हाट्सएप DM में भी बहुत लोग पूछते हैं, सर कभी ऊपर जाएगा. मैं बोला अभी 2 दिन पहले तो ऊपर था, कल 1720 में बिका मेरा. तो the market has become overbought and it's ready for a drastic fall where all of us will lose money, including myself. I will lose some money, but I am hedged all the time. I was hedged 15 times, now it's 12 times. The point being, see, एक बात बोलता हूँ, आपका पैसा है, आपको जो भी करना है, आपको पूरा अधिकार है. मुझे आप 8 आना नहीं देने वाले हो या मेरे से लेने वाले नहीं हो. लेकिन just because I have seen the world,
I feel the need to dispense whatever I understand. Okay, it's only 30%, but whatever I know, to people on Twitter and in real life also. Please, at least for heaven's sake, don't buy anything new. जो है वो संभालो, अगर संभालना है. और अगर हाँ, दूसरा बात, January expiry down, February expiry down, March expiry 17,080. I am not narrating January, February because I forgot. One was 17,390. That much I remember. Okay. Now, the expiry was 17,080. And on the first day only, they ramped up Reliance. Second day, they ramped up HDFC Bank. And everything. I'm only talking about FNO, please. I will always talk about FNO. All the scripts in FNO, more or less, went up by 10 to 15%. Except few in which I am long, they went down. Both नाइंसाफी है हमारे साथ. Anyway, doesn't matter. So, I'm telling you, on the day the expiry was 18,070, I did a poll whether Nifty will be 17,000 above or below. The poll was 50-50, and it was quite a big poll. Now, at that point of time, it was 50-50. Now, if I take a poll, it will be 30-70. I don't know how to explain to you, but this expiry to expiry is a very big game. आपका पूरा कपड़ा निकाल देता है. आप जो वीकली में बेच के 10-10 रुपया निकलता है ना, तो एक साथ में 200 रुपया लेके जाता है. तो ये जो एक्सपायरी आएगा, बहुत ही मुश्किल लगता है कि 17,200-300 के ऊपर आएगा. Because on an average, if for 4 months our Nifty has remained below 300, तो ये 4 दिन का चांदनी से कुछ नहीं होगा भाई. और एक बात बता दो, ये आप लोग बोलते ऑपरेटर ऑपरेटर है. ऑपरेटर कितने खतरनाक होते हैं, कितने जालिम है, हम जानते हैं उनको. वो लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना. उनका एक ही काम है, देखो 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 देखो. एंड व्हेन दे अटैक, इट्स ब्रूटल एंड फाइनल. प्लीज save your shirt. Nothing is gone. If money is gone, nothing is gone. But at least keep your head at peace. The times to come from starting from tomorrow. I can be wrong horribly, but starting from tomorrow, there will be no let up for bulls. Because today I saw people were ramping up stocks. My God, how they ramped up. Now tomorrow, Tintin, no muscle power. Then what? Finished.
एक दो को तो हम गोली मार देंगे। चलिए बहुत कुछ फिर बोलता हूँ। और वो कौन बोलना चाहेगा? बोलिए ना, कोई तो बोलो। Yeah, sir. Good evening, Samad. हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ समझ भाई। Sir, seeing the results of HDFC Bank, I don't think so. If we consider it as a big bank, तो बाकी का जो भी रिजल्ट्स आने वाला है ICICI, एक्सिस, SBI ठीक है, चलो उनका वो बॉन्ड की वजह से उनका अच्छा रहेगा रिजल्ट, ठीक है, समवॉट। बट जो दूसरी प्राइवेट सेक्टर बैंक से मेरे को नहीं लगता है जिस तरह से HDFC बैंक ने रिजल्ट्स निकाले हैं, तो कोई वहां पर देयर विल बी पॉजिटिव सरप्राइजेस ओवर देयर। आई डाउट दैट। सेकंड थिंग, जिस तरह से रिलायंस बिहेव कर रहा है, एक दिन उसको होल्ड कर रखा है जस्ट टू मैनिपुलेट द मार्केट इंडेक्सेस, तो कोई भी दिन आई थिंक इट विल गो वे बिलो, क्योंकि अभी तो क्या है कि कभी भी नीचे रहता है तो एवरीवन स्टार्ट्स बाइंग, क्योंकि दूसरे दिन उसको ऊपर रखना पड़ेगा निफ्टी की वजह से। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस विद द रिटेल इज राइट नाउ यूजिंग। तो सेकंड थिंग जो ऑब्जर्वेशन मेरा है कि ये इंफोसिस का बॉटम हो गया है करके इंफोसिस को बाय किया जा रहा है कि भाई अब वो वापस वो इट विल कम ओवर एंड फिल अप द गैप एज यू राइटली सेड। तो आज के दिन में भी एडीआर ने वापस 52 वीक लो डाला है वहां पर अमेरिका में। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी भी देर इज एनी रिस्पाइट, इट कैन टच एनी टाइम, यानी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इट कैन टच अराउंड 800। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बाकी का तो बैंक्स का तो जो हाल होगा वो तो खुदा जाने सर। बट जो भी होने वाला है, यानी आज के दिन में ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है एंड दे आर डूइंग इट एट वेरी लो वॉल्यूम्स। seeing again because low volume है इसलिए they can manipulate anything, but जिस दिन ज्यादा वॉल्यूम रहा और जैसे आपने बोला कि जब रहेगा यानी कल के या कोई भी दिन नेक्स्ट डेज में, तो इट कैन बी वेरी ब्रूटल सर। द फॉल कैन बी वेरी ब्रूटल एंड इंडेक्सेस में 17,300-400 वीकेंड तक लग रहा है सर, ये एक्सपायरी तक। तो लेट्स सी सर हाउ इट पेंस आउट। एंड 41,400 का एक लेवल है बैंक निफ्टी का, उसके नीचे भी जा सकता है सर इस वीक में। Samad, I Yes, did sir. not know that you will disrespect me so much. कैसे सर? आप तो रिलायंस इंडेक्स की के बात बारे में बोलते हो तो हाँ सर। ऐसा क्यों नहीं बोलते हो 1600 हो जाएगा? वो तो हमारा टारगेट है भाई। नहीं सर, मैं तो शॉर्ट टर्म का बोल रहा हूँ सर। अच्छा शॉर्ट टर्म। कल पीपल सुबह ओवर में हियर 9 सर, बजे तक। पीपल ओवर हियर आर हियर फॉर शॉर्ट टर्म ओनली सर। उनको लॉन्ग टर्म में नहीं देखना है सर, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कभी। कैसा चलेगा? ये मार्केट लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्ट टर्म वो जुआ है, जुआ। आओ बकरा फंसाओ, मरो, पूरा पैसा दे दो, लोन लो, एफडी तोड़ो, क्रेडिट कार्ड पे पैसा लो, खेलो, सब लोग को अमीर बनाओ, यही मेरा ध्येय है। यस, और कुछ बोलना है समझ भाई? नहीं सर, थैंक यू सर। आई विल टेक योर लीव सर। थोड़ा तबीयत 100% नहीं है, बट आई थॉट कि आई शुड बी हियर सर। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शरद भाई हरेन बोलू छू, अहमदाबाद से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एक बात बताओ, ये टाटा केमिकल में क्या कर सकते हैं अभी? 200 रुपए का स्टॉक है। अच्छा, ये 17 नहीं 19 साल रखा था मैं, हाँ और 200 का 250 ही होता था। हाँ आप चेक कर लो। फिर ये पब्लिक आया, झूम झूम झूम, नाचम नाची, कर लो, आएगा वापस 200-250। ओके। कुछ बुरा बोला क्या हरेन भाई? ना बिल्कुल सही। ठीक है।
Okay, AK7. हाय शरद सर, एवरीवन, हाय एवरीवन। मेरा 2 क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट रखूंगा। एक, आज एक न्यूज फ्लैश हुई थी एलटीसीजी 30% आने वाले की, कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट में आती है तो एलटीसीजी वो 30%। इज इट मोर ऑफ ए र्यूमर और नहीं लाइक देयर इज सम डिनायल आ गया, चलिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जनरली वो हमेशा लॉन्ग साइड पे ही होते हैं, बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि व्हेन विल दे पैनिक, क्योंकि मैं 1.5-2 साल से तो देख रहा हूँ हर महीने वो बाई कर रहे हैं और पता नहीं सेलिंग जानते ही नहीं। हेलो, लोकल विल बाय अनलेस यू until you give money। आप बंद करोगे वो नहीं लेगा, आप पैसा वापस मांगोगे वो बेचेगा। तो उनके ऊपर नहीं है, पब्लिक के ऊपर है। तो प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट ऐसा नहीं होता क्या उनमें, कि हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लें और दूसरे स्टॉक पे चले जाएं, या इंडेक्स हैवीवेट छोड़ के स्मॉल कैप में चले जाएं, समथिंग लाइक दैट। मैं वो ये समझाने को 1-2 घंटा तो मिनिमम लगेगा, बट मोटा मोटी बात है, लोकल इंस्टीट्यूट अपने पैसे से नहीं लेता है, वो पब्लिक के पैसे से लेता है। अब पब्लिक पैसा देती है, वो लेता है। अब पब्लिक बंद करेगी, वो बंद कर देगा। पब्लिक निकालेगी, वो बेच देगा, बस सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फिर, who's next? सर्वेंद्र भाई। केशवानी, बोलिए। केशव अरोड़ा। छोड़ो सर, वो नहीं है। सर्वेंद्र भाई बोलिए। अभिषेक भाई, I'll come in 5-10 minutes। एक कॉल आ रहा है पीछे, वो कट जाएगा ये। ओके। संजना, संजय। Hello. Yeah. Yes, sir. Am I audible? Yeah. Good evening to everyone. सर, जैसे लोगों ने बोला था, आपने भी अभी बोला कि मार्केट लॉन्ग टर्म की गेम है, तो सर अभी तो मुझे भी कोई वैल्यू बाइंग पिक्स तो नहीं दिख रही है, पर सर अगर कुछ इक्विटीज में शॉर्टिंग की पिक्स हो तो सर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर। तो सर मैंने रिसेंटली जैसे आप कह रहे थे कि आप ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो सर मैंने आरबीएल बैंक और चंबल फर्टिलाइजर्स का सर ओपन इंटरेस्ट देखा था, जहां पर सर थोड़ा बेरिश साइड व्यू था मेरा। तो आपके भी ओपिनियन चाहिए था इन दो स्टॉक्स के रिगार्डिंग सर। नहीं, ओपन बैंक का 4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, तो बेच देगा क्या? पागल है क्या? नहीं, ओपन इंटरेस्ट अकेला नहीं देखा जाता है, ब्रोकन बैलेंस शीट इज अ मस्ट। ये सर रिगार्डिंग आरबीएल बैंक, तो सर आप कह ही सकते हैं सर कि ब्रोकन बैलेंस शीट तो है ही उनकी, उनके। ये सर अच्छा हुआ यार। ओके। ये ये सर। नहीं, आपको नहीं बोलना। यस, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। डेल्टा बलरामपुर चीनी है, IEX है, और भी बहुत सारे स्टॉक है बंधन बैंक। उसमें। हाँ, ट्रेडिंग मत करो उसमें, वो फाटका चलाता है। हेलो ये शरद सर, आपका व्यू चाहिए था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। अरे सर, आई एम टॉकिंग। हाँ सर, आपका व्यू चाहिए था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे। अरे सर, आई एम टॉकिंग, आई सेड यू आर इंटरप्टिंग इन बिटवीन। सो आई एम सेइंग, ये सब शेयरों में मत जाओ, ये सब अल्टीमेटली FNO में से निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। तो ये सब स्टॉक में मत खेलो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो। हाँ बोलिए CFA, बोलिए, चलिए। हाँ सर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के रिजल्ट्स के बारे में पूछना था आपको। आ गया क्या? हाँ सर। अब कैसा है?
मुझे नहीं पता सर। EBITDA down, profit up 30%. EBITDA डाउन है तो हेलो हेलो हाँ बोलिए सर, गुड इवनिंग सर। बोलिए ना सर ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है इसको मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइनिंग में, तो मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग बाद में सुन सकें, तो आप इसको सुनने के लिए फिर से दोबारा आप पोस्ट कर दें। ठीक है। हेलो ओके सर। हेलो या शरद भाई, गुड इवनिंग ऑल। एक क्वेरी था शरद भाई। अगर आप 2 मिनट एडवाइस करें, जब हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन से उसको अगर हेज करना है तो आइडियली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में क्या केयर लेनी चाहिए? डिपेंड्स ऑन द टाइम। यस। अच्छा, स्टार्टिंग है, मिड मंथ है, एंड ऑफ expiry है, it all depends. Item, see, there can't be a general rule in stock market. Keep one thing in mind, there is no general rule for anything. बट एक जनरल गाइडलाइन तो हो सकता है सर। गाइडलाइन में तो ऐसा है, तू मेरे दिमाग में बढ़ जा, मिल जाएगा गाइडलाइन। It's very difficult to explain, narrate. It depends on how much money you want to lose. So many factors here. I understand. It also depends on the cash strike. Okay, So, why don't you join my Telegram channel? Surely, मैं करता हूँ। 10 लाख रुपया पर मंथ है। बिल्कुल, वो होपफुली वो ज्वाइन करेंगे सर। No, the point being, अगर ये जितने सारे स्पीकर है और सब लोग जो है ना, वो कोई मेरे को बोले ना कि शेयर बाजार में रूल है, ये ऐसा है, is wrong. There is no rule. Every moment is different. Everything is different. करेक्ट। फिर आप ऐसा करके बोलते हो उस टाइम ऐसा था ना, ये बहुत सारा लोग को मैं देखा है 2008 में ही चले रहते हैं, अभी तक बाहर नहीं आए 2008 से। अरे निकलो ना यार, 2023 से 15 साल हो गया। उस टाइम मैं 16 साल का था, अभी 31 साल का हूँ। और बोलिए सर। That's all, sir. Thank you. Thank you. Yes, Yuvraj. Hello. Yeah, tell me. Good evening, sir. Good evening. How are you? I am fine, sir. मैं सर एक्चुअली 2 स्टॉक सोच रहा था, थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ा स्टडी कर रहा था। थोड़ा सा एंट्री लेवल अगर बता देंगे तो एक है एकी एनर्जी है, दूसरा है प्रिसीजन कैमशाफ्ट। Wrong number, sir. ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। Yeah, ADIT. बोलिए ना, आदित्य विश्वास। जी शरद सर, गुड इवनिंग। मैं आपको फॉलो करता हूँ सर, मतलब मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं आपके स्पेस में आया हूँ, तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सर मुझे जानना था, जैसे आप मार्केट में पहले से ही हो, तो पहले के टाइम पे जब 80s 90s के टाइम पे वहाँ पे जो अपने रियल ट्रेडिंग देखा है फ्लोर पे, तो वहाँ पे कैसे होते थे वो, तभी का डिफरेंस, तभी के लोग किस किस मतलब चीज़ों के बारे में बात करते थे। आजकल बहुत रेयरली सुनाई देता है अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स के बारे में, अच्छे अच्छे बिजनेसेस के बारे में जो बात करते हैं और किस तरीके से बात करते हैं, और तभी कैसा गेम चलता था। आपने तो लाइव देखा है सर, तो वो जानना चाहूंगा मैं, अगर आप बोल पाएंगे तो सर, तभी का और अभी का डिफरेंस, क्योंकि तभी बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग ट्रैक करते हैं
तो तभी के टाइम का और अभी के टाइम का डिफरेंस, तो आप अगर कुछ इसमें बोलना चाहेंगे सर? Nee, that time was a different era, yaar. Everything was different. Our population was less. Our market was minuscule. Everybody knew everybody in the market. Now market is huge, 260 trillion. राइट, राइट, राइट सर। वो जो फ्लैट मिलता था उस टाइम 4 लाख में मिलता था, वो अभी 20 करोड़ का है। तो अभी सब एवरीथिंग, और सिगरेट 5 पैसे का मिलता था, वो अभी 17 रुपए का मिलता है। राइट, जी सर। क्योंकि मैंने बहुत मतलब इसके बारे में मतलब पिछला देखा भी है, मतलब पढ़ाई भी किया है इसके बारे में, देखा भी, वो समझा भी है मार्केट। तो अभी तो मैंने नया नया हूँ मार्केट में और मैं सीख ही रहा हूँ। और बस थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। और अगर 2 मिनट आप अलाउ करेंगे तो अगर कोई ऐसा सौदा आपने वो टाइम पे देखा हो, जो एकदम इंटरेस्टिंग सौदा हो और जिसमें आपने पैसा बनाया हो, या फिर मार्केट में किसी ने पैसा बनाया हो वो टाइम पे, कोई ऐसा सौदा अगर आप बताना चाहेंगे सर? नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम सर। बट थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमें बोलिए। Yes, sir. Good evening, sir. Thanks for Good, giving opportunity. बोलिए बोलिए बोलिए। सर मैं पूछना चाहता था, जैसे मेरे को कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का था, तो एफडी में करना चाहिए, या जो हाई डिविडेंड स्टॉक जैसे अभी वेदांता पीटीसी या आरईसी या सरकारी और प्राइवेट जो हाई डिविडेंड स्टॉक्स है, आईटीसी हो गया या कुछ और भी हैं, उनमें करना बेटर रहेगा 4-5 साल के लिए, या फिर एफडी में ही जाने देना चाहिए? और कितना अमाउंट? 10 to 20 लाख सर। आधा इसमें डालो, आधा उसमें। आधा आधा स्टॉक्स में, हाई डिविडेंड स्टॉक्स जो है सर, तो उसमें पीएसयू में सेफ रहेगा सर? मतलब सेफ तो कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा रहेगा सर? अभी आप भी तो समझते हो ना यार, डिविडेंड देना बंद कर दिया तो बराबर है। ओके, थैंक यू सर। अमित जी, वेदांता में मत करना डिविडेंड देख के, है ना? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट भाई। वहां पर तो भाव भी नहीं आएगा फिर। थैंक यू सर। चलिए बीने। Hi, Sarath sir. Good evening, and so happy to see you, Fact Finder, and a lot of people. It's a pleasure to be back in your space. So, just my question is basically with the commodities. I've just do this copper cable supply here in the Middle East. I've noticed that a pattern that the copper prices are going back to the 9,000 levels, as well as the gold is picking it up back on the pricing. How do you see on the future, sir? Let's say on a 6 month or a year average. I don't know the quantum. Okay. But it will be having an upward bias only. Okay. Okay. Copper specifically, because demand is less. Yeah, Fact Finder. Hi Shahji, hi Abhishek, hi Yash, hi Sarvendra. Hi. Hi. So I just just wanted to share a couple of things. There's a lot of copper that is used in electric vehicles, apart from aluminium, because you require a lot of. So the quantum of copper is substantial in case of an EV, and as the percentage of EVs go up, especially when it comes to for instance, commercial vehicle EVs, which will obviously be use a lot more, and commercial vehicles EVs haven't taken off as yet compared to normal cars. But if you were to move to a situation where say 30% of the world's new car sales become copper, I mean EVs, then in that case there'll be a massive shortage of copper. So that's one thing. Unless they discover they're able to use something like a carbon-based conductor,
Second thing on gold, there's obviously a limited amount of gold, and one thing is very certain, right? If you look at, for example, look at India's current account deficit. A large part is China, but then a second part is Russia. And the Russians obviously have one of the largest current account surpluses in the world, and they're parking that in gold. Likewise, every other country is increasing their exposure to gold. India is the only exception which actually sold gold. But net, I think gold purchases by central banks will continue to rise. Um, and if anybody is ever speaking about a BRICS-based currency, that currency has to be backed by gold. Then that people might trust it. Hello, somebody there. Anand, can you put yourself on mute, please? Yeah. So that. So keep that in mind. And usually, what happens is that typically the breakout in gold happens when U.S. Fed actually stops hiking rates and goes for cutting rates. That's when gold actually takes off in a massive spike. Faxfender, actually, Binish here again. I could notice that the Turkey has been buying gold for quite some time. So I believe almost a year they have started. Same like developing nations are more going towards the gold purchase. And one more thing I've noticed regarding to the cable, because last 18 years I've been in the cable industry. The Middle East is predominantly use copper cables, whereas in India using at the moment aluminum conductors. So going forward, I could see a demand comes on copper cables in India as well when it comes to the conductivity and much better, longer duration, resistance, and everything. So that could another potential for especially Indian cable companies like KEA. I distribute cable company called KEA here in Qatar. So I could notice that there are some of the with the general manager some discussions. I could notice that they are doing very good in Africa and US as well, but mainly into the copper cables. But rest of India they are still in aluminum conductors. Just an add-on. Thanks. Thank you. Yeah, RK, बोलिए. RK, you don't want to speak? Gautam Gunjan. Yeah, hi everyone. So, hi Sharad sir. My question is for Fact Finder regarding the rates that say more or less people are saying that Fed is again going to raise rates by 25 basis points. So, Fact Finder, do you think that India will also raise rates going forward, or once they have paused, so it is difficult for them to raise the rates further? Thank you. My view is that government will not raise rates because at the end of the day, if they raise rates, the government's cost of borrowing also goes up. Secondly, if you raise rates, then the rupee will not depreciate. The government wants the rupee to depreciate. RBI wants the rupee to depreciate because your GST collections improve when rupee depreciates. Your RBI liability is rupee, and your asset is dollar. So if your rupee depreciates, your liability goes down, and RBI makes profit. So the RBI will keep rates low because it helps the government's cost of financing to be lower. RBI will keep rates low so that the rupee depreciates, so that they make money on their asset balance sheet, and then they pay dividend to government of India. RBI will keep rates low because then rupee depreciates and GST collections improve. Okay. I have a small follow-up question, but won't that raise the inflation much higher? Right now, also there is the impact अरे of भाई तेरे को क्या बोलता हूँ, तू DM मार लेना फैक्ट फाइंडर को.
ये हाँ, बजट ठीक का बातचीत का है, किधर इंटरेस्ट किसको, कल ठीक है क्या सर। लेना है बेचना है वो बोलना। ओके सर। या डायरेक्ट डायरेक्ट है सर, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर, ना। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक HCL, आई मीन सिमिलर, बिकॉज सब IT सेक्टर में सिमिलर ही रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो HCL बाकी IT पीयर्स के कंपेरेटिव में आई थिंक फॉल कम हुआ है। सो आई थिंक आई मीन आई एम जस्ट फीलिंग दैट कि HCL में एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है शॉर्टिंग का पोस्ट रिजल्ट। एंड आई थिंक हाई पी स्टॉक्स में वही पॉलीकैब, SRF, I am feeling that bearish momentum can come anytime. Thank you. थैंक यू। या अब पीयूष मावानी बोलिए। पीयूष मावानी बोलिए। और TS। हेलो सर। हेलो सर मैं संवर्धना मदरसन के बारे में पूछना था। हाँ पूछो। सर वो कैसा है, मतलब कि उसको बाय कर सकते हैं क्या करंट लेवल? हाँ ले लो, अच्छा है। थैंक यू सर। और नीचे आवे तो बेच देना। ओके सर, ओके। ओके। हेलो। हाँ बोलो। हाँ शरद सर, नमस्ते सर। नमस्ते सभी लोगों को। सर मुझे आपके पास से ये जानना था कि आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करते हो आप, तो वो ओनली चार्ट बेसिस पे रहता है या फिर कोई अदर्स पैरामीटर्स भी रहते हैं इसमें? नहीं, मैं चार्ट देखता हूँ। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल देखता हूँ। मूविंग एवरेज देखता हूँ। और भी जो है वो देखता हूँ और इनिशिएट करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। यार 1000 बार सबको बोला है, मुझे चार्ट आता नहीं है। मैं कभी चार्ट देखा नहीं है, कुछ नहीं देखा है। एनीवे, yeah, fact finder, you want, or I'll complete this 2-3. No, I don't want to add to it. There was a question, I think, a while I hadn't joined earlier. There was a question about this taxation, नहीं वो तो डिनाइल आ गया ना। No. So let me just explain to you. So what happens typically is whenever Bloomberg comes out with a story, at least, we've been using Bloomberg for almost 18-20 years. Bloomberg, when they come out with a story, they verify it with at least 3 sources. And they typically do not put out a story otherwise. They're extremely reliable. Like, for example, if ET now puts out a story or CNBC puts out a story, nobody, you might just ignore it. But when Bloomberg puts out a story, you never ignore it. And so these guys would have obviously checked internally with 2-3 people of their sources. Now, of course, the government has a responsibility to deny it. I mean, how many companies, when Bloomberg comes out with a story, how many companies say we do not have any information about it, and then a few days later something comes out? The point I'm trying to make is that I'm sure that there is discussions of this. Obviously, it'll come and the government can comment on it only when it finally comes out as a draft and it's introduced into the parliament. Till that happens, they will always deny it. But I'm fairly certain, looking at the pattern of this government, they want to tax absolutely everything. And they want to, in the garb of making it simple. So I'm fairly certain this is going to happen. May not happen now. It'll happen probably next year after elections, but it'll certainly happen. Bloomberg wouldn't come out as a story otherwise. Okay, point noted, accepted. नितिन। यस सर। सर HDFC बैंक का कल का पूछना चाहते हैं, कल का मतलब क्या रहेगा? कल 1663 होके 1654 होके 1658 होके 1656 होके 1661 बन जाएगा। बोलो और कुछ। अरे क्या सवाल हुआ सर आपका? एक ज्योतिष है क्या हम लोग?
आपको नहीं जितना मालूम है उतना ही हमें मालूम है। नहीं, और एक्सपीरियंस होता है ना सर। क्या एक्सपीरियंस है कि नीचा जा रहा है बस, अभी कितना जाएगा क्या मालूम पड़ेगा। और एक बात बताता हूँ आपको, ये ट्रेडिंग में है ना, अगर अगर आपको ख्याल आता है कि ये कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, रात भर सपने में आता है, तो आपका ट्रेड गलत है। सूरज की पहली किरण के साथ तेजी मंदी निकलेगी भाई। और बताओ नितिन भाई। और सही है। थैंक यू। थैंक यू टीएस सर। या टीएस Raju, TS Raju. चलो, इज नॉट देयर। Oh, friend, I commented on your tweet about this Divi's Lab. You liked it? No, I haven't seen it. I'll go to see it right now. But if you wanna, I'm sure it'd be funny. But yeah, in fact, so the thing I think I wanted to emphasize is that if you think about the results, right? You know, IT sector is about 17-18% of the Nifty index, and I'm fairly certain that earnings growth for the IT sector is only going to be about 5-6% for the next. In fact, it's possible that some of the IT companies might report a 0% profit growth in FY 22-24. Okay, and nobody's building that in. Most people are building 8-9%. But let's say you get a 5-6% profit growth for both Infosys, TCS, and every other IT company. Maybe even a 1% for Wipro. The point is that 15% of your index is already showing low single digit earnings growth. Then you have Divi's Labs, which is also showing you almost flat, earnings growth. Autos, like for example, Maruti will definitely see an earnings cut in my view because I think there's a huge buildup in inventory and discounts are rising already. Then you have Reliance, which will probably see earnings downgrade because there's a sharp fall in refining margins. So if you put and Reliance is about 14% of the index. So if you, in my view, even SBI, for instance, they will be a disappointment in the loan growth. I mean, net interest margins might look decent, but loan growth will, in my view, will become a problem. So if you think about FY24, no, I think there will be a decent cut to earnings in FY24, and we might only end up with 8-10% earnings growth, which is actually very, very low. I this is just something I want to share. Surrender, you free? Yeah, Ashwat bhai. Yeah. I just wanted to join. No problem. Then to add to whatever is happening last week or so, people have got Gango. ये जो 17,500 के ऊपर आ गया, जो मुझे नहीं लगता था ऑनेस्टली कि 17,500-600 के ऊपर बहुत ज्यादा जाएगा, बट जाके टिका हुआ है. नॉट दैट कि वहां से कोई रनअवे रैली आ गई और भाग गया है, बट फिलहाल 17,500-600 के ऊपर टिका हुआ है. सो दैट्स द ओनली सपोर्ट एरिया. आई थिंक 17,600 इज अ गुड सपोर्ट एरिया स्पॉट पे टाइमिंग के लिए. बट आई थिंक ब्रेकआउट तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, मोमेंटम पकड़ा नहीं है. सो अगेन टू मी लुक्स लाइक मोर लाइक अ ट्रैप शॉर्ट टर्म. अब वो ठीक है, अभी एक्सपायरी में 2 दिन बाकी है, तो पकड़ के रखेंगे कि छोड़ देंगे, वो देखते हैं. बट ब्रॉडली आई वुड टेंड टू अग्री कि भाई बहुत कोई ऐसा गेम चेंजर नहीं है ये वाला रैली जो है. दिस नॉट बीन अ बिग गेम चेंजर. वो एक खाली उसमें एक 300 पॉइंट का गैप है. सो पीपल हैव टू आल्सो रियलाइज दैट वो लॉन्ग वीकेंड के बाद एक जो गैप अप से चालू किया, जो आप बात कर रहे थे स्मार्ट मनी की, स्मार्ट मनी नोज व्हेन टू इम्पैक्ट एंड वेयर टू इम्पैक्ट. सो वो जो लॉन्ग वीकेंड पे वो जो 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप खींच लिया, 17,080 वाला निफ्टी सीधा 17 फ्यूचर 17,380 हो गया पहले 10 मिनट के ट्रेडिंग में.
तो आई थिंक वही है. आई थिंक इट्स मोर टू डू दैट इज वाई ये 300 पॉइंट आपको बाजार ऊपर दिख रहा है. नहीं तो ये बाजार 300 यहाँ नहीं होता और बाजार 17,500 के नीचे ही होता था. सो यू हैव टू ऑल्सो थिंक अंडरस्टैंड कि वो एक फ्रॉथ, वो एक 300 पॉइंट का जो गैप है उसके वजह से बाजार आपको इतना ऊपर दिख रहा है, बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं लगा, ऑपरेटर का पैसा ही नहीं लगा उसमें कुछ भी. उसको खाली वो एक लॉन्ग वीकेंड के बाद उसको स्मार्ट मनी को खाली 300 पॉइंट ऊपर खींच के 10 मिनट सस्टेन करना था. पूरा गांव फिल लेके ऊपर आ गया. सी इट्स ऑल अबाउट योर फिल्स. आप बाजार खुला 10 मिनट और आपने फटाफट 20 सौदे करंट मार्केट प्राइस के आसपास लगा दिए, तो स्मार्ट मनी का काम खत्म. उधर ही सौदे होने शुरू हो गए एंड बाकी किसी ने शॉर्ट करना नहीं है, तो बस बाजार उधर स्टेबल हो गया. फिर वहां से मुझे खींचना है. सो स्मार्ट मनी गॉट अ 300 पॉइंट कुशन ऑन दैट लॉन्ग वीकेंड, विच इज व्हाई यू कैन सी निफ्टी एट 17,600. नहीं तो मान के चलिए कि ये 17,400 होता, 300-400 होना चाहिए था ये निफ्टी स्पॉट अभी. तो बस वही है. सो दैट इज वेयर थोड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, और जिनके भी 17,500-600 के ऊपर स्टॉप लॉस हुए थे उनके ट्रिगर हुए. बट स्टॉप लॉस मैं सबको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि व्यू चेंज हो जाएगा एट दैट वेरी मोमेंट. एवरी स्टॉप लॉस इज नॉट अ व्यू चेंज. ठीक है, कभी कभी स्टॉप लॉस ऐसे होते हैं जहां से आप पलटी मारते हो और आप बोलते हो कि व्यू भी चेंज हुआ, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉप लॉसेज आर जस्ट स्टॉप लॉसेज, दे आर फॉर रिस्क मैनेजमेंट. स्टॉप लॉस से व्यू चेंज नहीं होता. लोग हमेशा स्टॉप लॉस हो गया आपका सर तो बस व्यू चेंज कर लो ऐसा सोचते हैं, बट स्टॉप लॉस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इट इज नॉट फॉर व्यू फॉर्मेशन. स्टॉप लॉस हिट डज नॉट मीन दैट द व्यू चेंजेस. तो मोटा मोटी यही लग रहा है मुझे कि अगेन बिकॉज ऑफ दैट गैप ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, और देख लेते हैं. आई थिंक परसों का जो हाई था वो नहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, और अब बाजार धीमे धीमे नीचे ही फिसलेगा. इज माय कॉल. सो लेट्स सी, वी विल वेट फॉर दिस एक्सपायरी एंड दिस वीकली क्लोज.